Hello, bachcho. So let's read the question. The question says, in the axon of a neuron, the impulse is generated by the exchange of. First option is sodium and potassium. Second option is magnesium and chlorine. Third option is calcium and potassium. And fourth option is sodium and chlorine. So the key concept of this question is generation of impulse is said to be in a polarized state or a resting state when there is no generation of impulses. When there is no generation of impulses or action potential. State because the axonal membrane is selectively permeable to only a specific ions, particularly sodium and potassium. During the resting state of the axonal membrane or during the polarized state, resting state में जो inside of the axonal membrane होता है वहां पे पोटेशियम आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन कम होता है. On the other hand, the outside of the axonal membrane वहां पे सोडियम कंसंट्रेशन ज्यादा होता है and potassium concentration कम होता है. Also, in the inside, there are some negatively charged proteins. There are certain negatively charged proteins which imparts an overall negative charge to the inside of the axonal membrane, negative charge. While on the other hand, बाहर comparatively एक positive charge होता है. So the difference between this charge actually creates an ion gradient. An ion gradient between the outside and the inside of the axonal membrane. This whole process is maintained by the sodium potassium ATPase pump, which pumps 3 sodium ions outside and 2 potassium ions inside. When an action potential reaches the axonal membrane, the influx of the sodium ions which leads to the membrane depolarization. इसे मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन है वो रिवर्स हो जाता है. This complete thing happens along the whole length of the axon, therefore conducting an impulse throughout the axon. Sodium influx होता है. This period is actually a very brief period. The period of sodium influx is a brief period. Now increases the permeability of the potassium ions outside the axonal membrane. Finally, restores the resting potential of the membrane.
बैक टू द क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि जो इम्पल्स जनरेट होता है वो किन किन आयंस का एक्सचेंज से होता है। सो इम्पल्स जनरेशन के बाद नॉर्मली एक सेल में, जो नॉर्मली न्यूरॉन सेल्स होते हैं, उसमें सोडियम पोटेशियम एटीपीएस 3 सोडियम आयंस बाहर लेके जाता है और 2 पोटेशियम आयंस इनसाइड लेके आता है, और पोटेशियम आयंस का इनफ्लक्स होता है। बट ड्यूरिंग द जब डीपोलराइजेशन होता है, जब इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है थ्रू द एक्सॉन मेम्ब्रेन, तब जो सोडियम का इन्फ्लक्स होने लग जाता है, और उसके तुरंत बाद आफ्टर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम पोटेशियम बाहर चले जाने लग जाता है, विच फाइनली रिस्टोर्स द resting potential of the membrane. So the only two ions which are exchanged during the impulse generation of a neuron is both sodium and potassium. Magnesium and chlorine नहीं होता, कैल्शियम पोटेशियम भी नहीं होता, और सोडियम क्लोरीन भी नहीं होता, जस्ट सोडियम पोटेशियम होता है. So the final answer for this question is option A. Hope you understood well. Best of luck.